नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषयनी जे ब्लूप्रिंट है प्रथम परीक्षानी एना विषे बात करवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ विडियोने स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो અને સંપૂર્ણ દરેક ધોરણની દરેક વિષયની બ્લુપ્રિન્ટ તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક તમને આપેલી છે, ત્યાંથી તમે પીડીએફ ફાઇલ મેળવી શકો છો। અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આ ચેનલ ઉપર છે તમને સૌથી પહેલા એસપીએસ કક્ષાના પેપર હોય, આઈએમપી પ્રશ્નો હોય, બ્લુપ્રિન્ટ હોય કે તમામ જે વિડીયો છે તમને આ ચેનલ ઉપર મળી રહેશે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ कर लेजो। वधारे समय ना लेता विद्यार्थी मित्रों विडियोनी शुरुआत करिए तो धोरण 9 सामाजिक विज्ञान प्रथम परीक्षा प्रश्नपत्रनु परिरूप। सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रकरण दीठ जे गुणभार है एनी वात कर लेवी, त्यार पछी हूँ तमने आगळ समजावीश के कया विभागनी अंदर तमने कयो पाठ पूछाय छे। ओके, ए तमामनी वात आपणे आ विडियोनी अंदर करवाना छे। तो सौथी पहला पहलो पाठ है भारत में ब्रिटिश सत्तानो उदय, जे 100 गुणनु तमने पूछाशे। त्यार पछी बीजू प्रकरण प्रथम विश्वयुद्ध और रशियन क्रांति, जे 3 गुणनु पूछाशे। त्यार पछी नूतन विश्व तरफ प्रयाण, जे 5 गुणनु। भारतनी राष्ट्रीय चळवळो, जे 100 गुणनु पूछाशे। त्यार पछी प्रकरण नंबर 8 भारतना राज्य बंधारणनु घडतर अने लक्षणों, जे 4 गुणनु पूछाशे। त्यार पछी 9मु प्रकरण मूलभूत हको, मूलभूत फरजो अने राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो, जे 6 गुणनु पूछाशे। त्यार पछी भूगोलना जे पाठ है भारत स्थान भूस्तरीय रचना अने भूपृष्ठ 1, जे 5 गुणनु। भारत स्थान भूस्तरीय रचना अने भूपृष्ठ 2, जे 8 गुणनु। अने जल परिवार, जे 7 गुणनु पूछाशे। अने आवी रीते विद्यार्थी मित्रों तमारुं जे पेपर है टोटल 50 गुणनु थवानुं छे। आ जे गुणभार है ए रीते आखुं पेपर आववानुं छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आखुं आपणे प्रश्नपत्रनुं माळखुं छे एना तरफ आगळ वधीए तो सौथी पहेला विद्यार्थी मित्रों विभाग ए आवे छे। विभाग एनी अंदर प्रश्न क्रमांक रहेशे 1 થી 15। एनी अंदर 1 થી 4 नंबरना जे प्रश्न है एनी अंदर विकल्पोवाळा प्रश्न आवशे। त्यार पछी 5 થી 8 नंबरना जे प्रश्नों है एनी अंदर खाली जग्या पूरवानी हशे। 9 થી 11 नंबरना जे प्रश्नों है एनी अंदर खरा खोटा आवशे। शुं आवशे? खरा खोटा। त्यार पछी 12 થી 13 12 અને 13 एनी अंदर योग्य जोड़का जोड़ो 2 गुणना प्रश्न थशे। अने 14 થી 15 एनी अंदर प्रश्नों जवाब 1 अथवा तो 2 वाक्यनी अंदर तमारे लखवाना थशे। अने आवी रीते विद्यार्थी मित्रों विभाग ए छे तमारो 15 गुणनो थवानो छे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों विभाग बी जोईए आपणे तो विभाग बी नी अंदर छे तमने शुं पूछाय छे तो के एनी अंदर विधान समजावो, परिभाषिक शब्दों समजावो, तफावत आपो, मने ओळखो, भौगोलिक स्थाननी ओळख, व्यक्ति विशेष, आवा बधा प्रश्नों छे एनी अंदर पूछाय छे। जेनी अंदर 9 प्रश्नों तमने टोटल आपेला हशे, एमांथी तमारे कोई पण 6 प्रश्न लखवाना थशे। बोर्डवाळाए खूब ज फायदो थाय एवो विकल्प तमने आप्यो छे। शेनो? तो के जनरल विकल्पनो। ओके, तो 9 प्रश्नमांथी तमारे कोई पण 6 प्रश्न लखवाना छे। अने ए 6 प्रश्न तमारे तैयार करवा माटे कया कया पाठ तैयार करवाना छे तो के प्रकरण नंबर 1, प्रकरण नंबर 2, प्रकरण नंबर 4, प्रकरण नंबर 8, प्रकरण नंबर 9 और प्रकरण नंबर 15 आटला जे चेप्टर है, आटला जे प्रकरण है तमारे विभाग बी माटे तैयार करवाना छे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों विभाग सी है एनी अंदर तफावत है, टूंक नोंध है, कारण आपो एवा प्रश्न है, एना पछी नक्शो है, ए बधा प्रश्न तमने आमां पूछवामां आवे छे। प्रश्न क्रमांक 25 થી 32 15 गुणनो विभाग है, जेनी अंदर टोटल 8 प्रश्नों आपेला हशे, एमांथी तमारे कोई पण 5 प्रश्नों लखवाना थशे। एना माटे खास तमारे चेप्टर नंबर 1, 3, 9 ने 14 तैयार करवानुं छे। अने नक्शा माटे तमारे अलगथी 13, 14 અને 15 आ प्रकरण तैयार करवाना रहेशे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों विभाग डी है। विभाग डी नी अंदर शुं छे तो के टोटल 3 प्रश्न आपेला हशे, एमांथी कोई पण 2 प्रश्नना जवाब लखवाना थशे। 1 प्रश्न हासो लखो एटले 4 गुण, 2 हासा लखो एटले केटला गुण तो के 8 गुण। तो एनी अंदर छे मित्रों सविस्तर प्रश्नना जवाब लखवाना थाय छे। टोटल 3 चेप्टर तमारे तैयार करवाना छे। प्रकरण नंबर 4, 13 અને 14 आ 3 प्रकरण तमे तैयार कर नाखो एटले विभाग डी ना तमारे 8 मार्क रोकड़ा थई जाय। अने अभ्यासक्रमनी वात करीए तो जून थी सप्टेम्बर सुधीनो जे अभ्यासक्रम छे तमने पूछवामां आववाना छे। अने बोर्डे आ वखते सीबीक्यू टाइपना प्रश्नोनो एक विकल्प मूक्यो छे
તો CBQ ટાઈપના પ્રશ્નો કેવા હોય એ આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ. વાર્ષિક પરીક્ષાનું પ્રશ્ન પેપર આપ્યું હોય એની અંદર કદાચ CBQ ટાઈપના પ્રશ્નો હશે. જો અહીંયા લો, વિભાગ C ની અંદર આ CBQ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે. ઉપરના ચિત્રનો અભ્યાસ કરી અને નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ લખવાનો છે. CBQ ટાઈપનો પ્રશ્ન એવો પ્રશ્ન કે જેની અંદર તમારી બધી જે ક્ષમતા છે એને મપાઈ જતી હોય છે. દાખલા તરીકે આ પ્રશ્ન તમને અહીંયા આપેલો છે કે ઉપરનું ચિત્રનો અભ્યાસ કરી અને નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. આ ચિત્ર તમારે જોવાનું છે અને ત્યાર પછી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો સૌથી પહેલાં તો તમને આખું ચિત્ર સમજાશે ને તો જ તમને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આવડશે. એટલે બધી ક્ષમતા છે તમારી આની અંદર ચેક થઈ જતી હોય છે. તો આ પ્રકારનો પ્રયાસ છે એ બોર્ડ દ્વારા આ વખતે કરવામાં આવ્યો છે. તો આશા રાખીશ કે તમને આ પણ પસંદ આવ્યું હશે અને વિડીયો પણ પસંદ આવ્યો હશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. કારણ કે એજ્યુકેશનલના કોઈ પણ વિડીયો હોય તો સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સારથી સપોર્ટ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મળી રહેશે. ઓકે, તો મળીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.